Mm. Hello, everyone, and welcome to Scholar Studio Institute platform. I'm Shanza Kiran, a parasitologist and a freelancer, in addition to an online tutor. So, basically, students, I felt a need that many of you have little to no knowledge about the sample size calculation. So, I have decided to select this topic for you today, and inshallah, by the end of this lecture, you will know how to calculate the sample size for your specific medical research study. So let's start. So students, why there is a need of a sample size calculation? As you know that it's very difficult to include the entire population in our research work because it's not feasible and it's not under control. So we take some individuals which represent the entire population, and the representative individuals are the sample of the population. Basically, the sample is a subset of the whole population, and this subset is the some of the individuals. They may be some of the individuals, and they may be samples of species, and in that case, they are also the number of species as well. So, long story short, sample represent the selected subject, that is population. If the sample is too short, the results may not be reliable and it won't make our research study worthy or make it worth it. And if the sample is too big, it's a total waste of time, money as well, and the effort is useless. Therefore, the right sample size is required, which balance between accuracy and the feasibility. Now we will see which factors it influence the sample size. उससे पहले ये बताती जाऊं कि सैंपल साइज से आपने क्या अखज़ किया। इससे ये मुराद है कि पॉपुलेशन, एक सर्टेन पॉपुलेशन जिस पे आप अपनी रिसर्च कैरी आउट करना चाह रहे हैं, उसका साइज कितना होना चाहिए दैट कुड बी इंक्लूडेड इन आर रिसर्च वर्क, या जिस पे हम अपनी रिसर्च स्टडी को अप्लाई कर सकें। दैट इज बेसिकली अ सैंपल साइज. Now we will see which factors influence our sample size, and these factors are basically calculated before the research work. Okay? Before calculation. These factors are decided before calculation. What are the four main things? Number one is confidence level, and it is represented by Z. I tell you, my students, when we collect data from a sample, we are making an estimate about the whole population. हम पूरे population के बारे में एक अंदाजा, एक तखमिया लगा रहे होते हैं from that sample or that representative individual. Okay, the confidence level tells us how sure or how certain we want to be that our sample's estimate is close to the real population. ये एक अंदाजा होता है हमारा कि हमारा जो सैंपल है वो कितना रियल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सकता है, हाउ मच इट इज क्लोज टू द रियल पॉपुलेशन. मेन थिंग, इट इज रिप्रेजेंटेड इन परसेंटेजेस. ठीक है, कॉमन चॉइसेस आर 90%, 95% or 99%. We choose in most of the cases 95%, and for that confidence level that is represented by Z, it has a value of 1.96.
students, from the confidence level, it doesn't show a surety. It tells us, for example, imagine you could repeat your survey or experiment 100 times, each time with a different random sample. If your confidence level is 95%, then it means that in about 95 of those 100 times, your calculated range will include the true population value. And the remaining 5 times, जो 5% रह गया, just by random chance, it won't represent. ठीक है? That random chance, that 5% or 10%, that is not included, that we are not so much confident about, it is included in the margin of error, ठीक है? Which we add or subtract in the final sample size value. ठीक है जनाब? Now the second factor is margin of error. It is represented by E. Basically, it is the amount of error we can tolerate in a research study. The margin of error is how far off we are willing to be in either direction, in a positive direction. That is, at the end, we will adjust that 5% और वी विल सब्ट्रैक्ट दैट 5%. हम लोग कितना एरर अपने रिसर्च स्टडी में टॉलरेट कर सकते हैं, इट रिप्रेजेंट दैट. नाउ द थर्ड वन इज एस्टिमेटेड वैल्यू फ्रॉम द प्रीवियस स्टडी. इसमें बेसिकली तीन चीजें आती हैं. दैट इज फॉर प्रोपोर्शन. For proportions here we take as prevalence. ठीक है. For proportions, for the prevalence studies, it is represented by P. और इसका कॉमन जो चेक पॉइंट होगा वो ये होगा किस तरह ये रिप्रेजेंटेड है. इट इज रिप्रेजेंटेड विद परसेंटेज विद कंडीशन. फॉर एग्जांपल 40% of nurse students are suffering from anemia in that particular population. That 40% is the proportion. And for mean studies, it is represented by standard deviation and is calculated as this estimated value actually shows the variability. If the outcome is proportion, I repeat, for example, it is a categorical type of data, yes no questions होते हैं जिसमें वहाँ पे हमें ये शो होता है इन फॉर्म ऑफ परसेंटेजेस. जैसे मैंने पहले एग्जांपल के थ्रू समझाया कि nursing students में 40% nurses जो हैं they are suffering from anemia. That 40% is the estimated value. And for mean, if the outcome is in form of the mean, data type is continuous data that is measured on scale. For example, average blood pressure or average sugar level of that population is this. So it is given in that form. And if no prior information is, अगर पहले से कोई existing research नहीं given या कोई literature review नहीं given, उस केस में हम P की value 0.5 use करते हैं because it's more conservative. It gives the larger sample size and it's more accurate. And the more accuracy means more information is available. अच्छा, इसके अलावा अगर कोई सिंगल पॉपुलेशन के अलावा दो पॉपुलेशंस को कंपैरेटिव स्टडी के लिए इन कंपैरेटिव स्टडीज व्हेन वी यूज
Actually, for the comparative studies where two populations are compared, for example, man and woman, or children and old age group people of particular gender or different gender are compared, then in that cases two populations are compared और उनका formulas भी अलग होंगे. ठीक है जनाब. Now here, now for the p-value, why we take p as 0.5 if no information is available? Because it gives the largest sample size and ensure we are not underpowered. Underpowered का मतलब इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ. क्या आपने दावत रखी कुछ लोगों की, काफी बड़ी दावत रखी, ठीक है, और आपको नहीं पता कि कितने लोग आने वाले हैं, देन यू वोंट टेक अ रिस्क कम खाना बनाने का या लिमिटेड खाना बनाने का. इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी तरफ से मैक्सिमम खाना बनाते हैं ताकि जितने भी लोग आ सके वो कवर्ड हो जाए. ठीक है, इसलिए पी जो होता है विद 0.5 वैल्यू, ठीक है, it gives the largest sample size. In largest sample size, large number of individuals are included in the research. I hope it's clear now. Then on the type of your research study, we choose the formula. ठीक है, whether it's a prevalence type, that is categorical type of data, then we use the proportion wala formula. And if the data type is continuous, where some thing is measured on scale, then we take the mean formula. उसके लिए अलग formula होता है. And if we are comparing two populations, वैसा कुछ scenario है तो उसके लिए एक अलग type of formula use होता है. Now we are digging into the formulas, so let's learn them together. अगर आपके पास सिंगल पॉपुलेशन है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, we want to know the prevalence of anemia in that particular group of population. This is the example. ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला यूज हो रहा है n equals to z square into p into 1 minus p divided by e square. z आपको मैंने बता दिया था, इट्स अ कॉन्फिडेंस लेवल. p जो था वो भी मैंने आपको बता दिया था. ठीक है, इट शोज द वेरिएबिलिटी. वेरिएबिलिटी के लिए ये फॉर्मूला होगा यूज p into 1 minus p. Then using the basic and the most important law of that mathematics, what mass, brackets of mathematics, sorry, bracket of multiplication, bracket of division, multiplication, addition and subtraction. ठीक है, अब जो ब्रैकेट्स के अंदर होता है सबसे पहले हम उसको कैलकुलेट करते हैं. 1 माइनस पी की कैलकुलेशन करेंगे, फिर जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे विद द पी, एंड देन वी विल मल्टीप्लाई विद द जी, एंड देन वी विल डिवाइड होल क्वांटिटी और द होल नंबर विद दैट ऑफ ई स्क्वायर. ई जो है वो मार्जिन ऑफ एरर है. We want to know the prevalence of anemia. This is the scenario. And from past studies, हमें वो दे दिया कि 40% of the particular group of people they are suffering from anemia. ठीक है, 40% का हमने जब p वैल्यू निकाली 0.4 आंसर आ गया. 0.4 कैसा है, 40 डिवाइडेड बाय 100 आप जब करेंगे तो 0.4 आंसर आ जाएगा. z equals to 1.96. This I have told you earlier. जब हम कॉन्फिडेंस लेवल 95% यूज करते हैं तो उसके लिए वैल्यू आती है, दिस स्टैटिस्टिकल टेबल से हम लोग ये वैल्यू चेक करते हैं, दैट इज 1.9. एंड द मार्जिन ऑफ एरर, यहाँ पे हमने मार्जिन ऑफ एरर लिया 5%. 5% को 5 डिवाइडेड बाय जब तो फिर आंसर आएगा 0.05.
नाउ द स्टेप्स इंक्लूडेड, सबसे पहले जी स्क्वायर निकाल लेते हैं 1.96, इसका स्क्वायर निकाल लिया 3.84, पी इंटू 1 - p, पहले 1 - p को सॉल्व करेंगे तो 0.6, देन p के साथ मल्टीप्लाई करके 0.24, then we will multiply what v square with the variability which we got, that is 0.24, तो उसका ये आंसर आएगा डिवाइडेड बाय ई स्क्वायर, मार्जिन ऑफ एरर यहाँ पे हमने 5% लिया था, तो उसके बाद हमने जब उसका स्क्वायर लिया और दोनों को जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई स्क्वायर किया, मतलब ऊपर न्यूमिनेटर का जो आंसर आया उसको डिनोमिनेटर से जब हमने डिवाइड किया तो हमें मिल गया सैंपल साइज 369 पीपल का सैंपल साइज हमें मिल गया। ये सिंगल पॉपुलेशन है और डेटा टाइप है जी कैटेगोरियल डेटा टाइप। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अगर हम सिंगल पॉपुलेशन लेते हैं विद द continuous data type, then in that case the sample size which is represented by n is equals to v into standard deviation sigma divided by e then whole square. यहाँ पे standard deviation is given, that is from the prior study. Average hemoglobin level is 1.5 gram per dl. मार्जिन ऑफ एरर, देखिए मार्जिन ऑफ एरर यहाँ पे हमने चेंज कर दिया 0.3, z is equals to 1.96, that is same, हम z 95% इंटरवल ही लेते हैं इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस। नाउ सॉल्विंग दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल z इंटू सिग्मा की वैल्यू डाल के सॉल्व करेंगे, देन e की वैल्यू डाल के इन दोनों को डिवाइड करके हमें आंसर मिला 9.8, उसका स्क्वायर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 97 people. This is the sample size of single population with a continuous data type. ठीक है जनाब, नेक्स्ट मूविंग। अच्छा, okay. Now for comparing two groups, two proportions formula includes both P1 and P2. Two means, अगर हम लोग continuous data में दो populations को compare करेंगे तो उसमें include होगा sigma and the difference we want to detect. Both require the alpha confidence and the beta power. इनकी population के लिए अलग formulas हैं. If you want me to explain that also, I can go ahead with that in the next lecture. यहाँ पे मैंने एक comparison दे दिया ताकि आपको याद रहे. What is your outcome? Outcome पे depend करते हुए हम लोग अपना formulas use करेंगे. If the prevalence is given with percentage and a condition, maybe anemia, maybe cancer, maybe immunoglobulin level, ठीक है, ये भी हो सकता है. और if the mean value is given or the average value is given and the data type is continuous, then we have different formula. So basically you have to remember the formulas, and I have explained each component of the formula very clearly, except in the two population cases where I haven't mentioned the formulas, and if you want me to do that, I can do that for you. Now here is adjust for real world issue. Actually the game starts after the calculation. हमें calculate करके वो मिल तो जाता है sample size, लेकिन the real thing is adjustment to the real world. Finite वो adjustment हम 3 तरीकों से करते हैं. उस sample size में हम कुछ चीजें adjust करते हैं, कुछ number adjust करते हैं. क्यों adjust करते हैं? ताकि वो एक population को बेहतर तरीके से represent कर सके.
तीन तरीके से कैसे करते हैं. फर्स्ट इज FPC, that is finite population correction. If the population is small, अगर तो population small है उसमें हम correction करेंगे. FPC, it has a specific formula for this purpose. और अगर कैटेगोरियल टाइप ऑफ डेटा है वहां पे कुछ पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्स नहीं देते. फॉर दैट पर्पस आइदर वी हैव टू add that particular percentage or we have to minus that particular percentage from the sample size. It is also a specific formula for this purpose. And if you are doing cluster sampling, then we have to use another formula for the adjustment of the figures that is known as design effect. If you want me to go in detail into these three things, then I can do it for you in the next lecture in detail, where we will discuss everything, every single component of these formulas with an example. I hope so this whole lecture makes sense for you. If you are still confused in something, you can tell me. I can make another lecture for you. Thank you.